हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Midpoint of A 0 0 and B 10 24 20 48 is A1. Midpoint of A1 and B is A2 and so on. Coordinate of A10 are option A 10 22 20 44, B 10 25 20 50, C 10 23 20 46, D 1 2. बच्चों, हमारे पास जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से शो करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट हमारे पास जो 2 पॉइंट का दिया हुआ है वो A1 है. और हम लोग के पास की कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वी विल यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट. एंड मिड पॉइंट यानी हमारे पास अगर कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है, रेस्पेक्टिवली a और b के कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट p जो इसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो p मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और मिड पॉइंट हमारे a और b के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड, एंड सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2. साथ ही हम लोग एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो सम ऑफ जीपी होगा. सम ऑफ ए जीपी फॉर एन टर्म, जो हमारे पास होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर. हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव गिवन एज the coordinate of A and B is 0 0 and 10 24 20 48. Just draw a line whose coordinates are given as 0 0 and 10 24 and 20 48, and its midpoint is given as A1. Then we can find the coordinate of A1 using midpoint formula x1 plus x2 by 2, that is 10 24 plus 0 by 2 and 20 48 plus 0 upon 2, and this will be 10 24 upon 2 and 20 48 upon 2. Now again midpoint of A1 and B. Now we have another point as A1 and B. B is 10 24 and 2048, while A is 10 24 upon 2 and 20 48 upon 2, and its midpoint is A2, and we have A2 as 10 24 by 2 plus 10 24 upon 2 and 20 48 upon 2 plus 20 48 upon 2. Thus midpoint of A2, therefore the coordinate of A2 becomes
1024 by 2 plus 1024 by 2 to the power 2, 1024 by 2 plus 1024 upon 2 square. Similarly, 2048 upon 2, 2048 upon 2 square. Similarly, for A3, we have 1024 upon 2 plus 1024 upon 2 square plus 1024 upon 2 to the power cube, and y coordinate will be 2048 upon 2 plus 2048 upon 2 square plus 2048 upon 2 to the power cube, and so on. We can find the coordinate of A10. Therefore, x coordinate of A10 can be written as 1024 upon 2 plus 1024 upon 2 square plus 1024 upon 2 to the power cube. Here we see that for A3, the maximum power is 2 to the power 3. Therefore, for A10, we can write as 1024 upon 2 to the power 10. And by taking common as 1024, we have 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 upon 2 to the power cube plus dot 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 1 upon 2 to the power 10, and this is the series which are in GP having common ratio 1 by 2 square upon 1 by 2, that is 1 by 2. And as we discussed earlier, the sum of a GP for n terms is a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. Using this result, we can write it a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, and this becomes 1024 into 1 upon 2, 2 to the power 10 minus 1 upon 1 minus 1 by 2, 1 by 2, and 2 to the power 10. This becomes cancel out 1 by 2, 1 by 2, and 2 to the power 10 equal to 1024, and it becomes 1024 by 1024, and 2 to the power 10 becomes 10 to the power 24 minus 1, which becomes 1023. Thus, x coordinate for A10 is your 1023. Now, let's come for the y coordinate, and for y coordinate, y coordinate for A10, y coordinate for A10. This is 2048 by 2 plus 2048 by 2 square plus 2048 upon 2 to the power cube, and so on, 2048 by 2 to the power 10. By taking 2048 as common, again we get the same series 1 by 2, 1 by 2 square, 1 upon 2 cube, and so on, 1 by 2 to the power 10, and हम लोगों ने पहले इसे सॉल्व किया है, दैट इज 1 by 2, 1 minus 1 by 2 to the power 10, 1 by 2 और 1
minus 1 by 2, that is 1 by 2, 1 by 2 will become cancel, and this becomes 1 minus 1 by 2 to the power 10. तो हम लोग इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 minus 1 by 2 to the power 10, और ये हो गया हमारे पास 2048 into 2 to the power 10 minus 1 by 2 to the power 10, एंड 2 to the power 10 हमारे पास 10 24 गुने 2, और ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 10 24 माइनस 1 10 23, यानी 2046, यानी हमारे पास जो A10 का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास फाइनली 1023 और 2046 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है. होप you will understand the solution, and the proper and appropriate option for the solution is option C 1023 and 2046.